सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कृषि बोध। और आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेनिंग। सो हम ट्रेनिंग का क्या फंक्शन है, क्या एलिमेंट्स है और कैसे ट्रेनिंग हेल्प करता है एक्सटेंशन एजुकेशन को और फार्मर को, आगे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो lifelong process which help an individual to adapt himself to the real world through participation and reciprocal interaction with the environment and enhance the quality of social, professional and national life. So education यही होता है, lifelong process होता है जहाँ participation होता है, reciprocal interaction होता है और यहाँ पे adaptation होता है। अब है टीचिंग, तो प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ लर्निंग स्टेप जो इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, सेटअप फ्रॉम लर्नर टू मूव फ्रॉम वन लेवल ऑफ कम्पिटेंसीज टू हायर लेवल ऑफ कम्पिटेंसीज। और फिर आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का डेफिनेशन लिंटन एंड पारिक के हिसाब से द प्रोसेस बाय विच द डिज़ायर, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड आइडिया आर इंक्लूडेड, fostered and reinforced. Training is learner oriented, job oriented and need oriented. So training, immediate application of learning is done in training. So training is function of knowledge, skill, attitude, others, that is personality trait, conduct, empathy, experience, self development. Retained information concerning fact, concept and relationship is knowledge. Ability to effectively apply knowledge and personal aptitude and attitude in work situation is skill. Extension personnel should have skill किस में, communication, technology demonstration, organization, training and diagnosis. Training skill that need to be emphasized at top level management. It is conceptual and design skill. Training skill that need to be emphasized for VLWs. Teaching skill. Individual predisposition towards certain thing. It is attitude. Main component of training: sponsoring agency, training institution, trainers, training. The gap between actual and desired performance of an employee or trainee is need for the training. A need is a discrepancy between desired performance and observed or predicted performance. Discrepancy view. And now democratic view. The need is a change desired by majority of some reference group. A need is something whose absence or deficiency proves harmful. Diagnostic view. Training is a process. Training process involve करता है 3 phases: प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग. सो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रिपरेट फेज होता है, हम प्रिपेयर करते हैं. ट्रेनिंग फेज में होता है इम्प्लीमेंटेशन, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और नाउ पोस्ट ट्रेनिंग फेज, आफ्टर ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं और एडजस्टमेंट फेज करते हैं. इन विच रेशन description of job and understanding organization receptively is included. Pre-training, in which phase participants explore in training situation which interest him, and training institution task is to provide necessary opportunities. Training, in which phase impact measurements, follow-up, report preparation is included. Post-training. Elaborated model of training differs from simple model of training process in feedback. Training model is that shares an empathetic attitude toward training institutes is elaborated model. Or spiral model of training is given by Linton and Parik. Approaches of training. Approach of training extension personnel are discrete phase, process, system approach to training. So discrete phase approach is also called as traditional model, and the approach in which training is conceived to consist of 5 discrete phases connected sequentially is discrete phase training. So ऐसा अप्रोच जहाँ ट्रेनिंग में 5 discrete phases हो तो discrete phase training होता है. The approach in which 5 phases are interacted or interdependent are process approach. Process approach given by R.D. Miller. System approach is derived from engineering concept. System approach is given by York. Approach which desire a series of interdependent system functionally linked and incorporated into total system work in order to achieve corporate effectiveness. System approach. A number of systems which are interdependent to such an extent
malfunction of one system can seriously impair the function of total system. तो सिस्टम अप्रोच टू ट्रेनिंग सैट, सिस्टम अप्रोच टू ट्रेनिंग क्या है? डायग्नोस्टिक अप्रोच है. अब यहाँ पे है ट्रेनिंग ओरिएंटेशन. यहाँ पे ओरिएंटेशन है, उसका एम्फेसिस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स है. सो ओरिएंटेशन एकेडमिक हुआ तो एम्फेसिस क्या होगा? ट्रांसमिटिंग कॉन्सेप्ट एंड इंक्रीजिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. कैरेक्टरिस्टिक मॉडल होगा लेक्चर लेना, सेमिनार एंड इंडिविजुअल रीडिंग. लिबरेटरी तो प्रोसेस ऑफ फंक्शन एंड चेंज, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. आइसोलेशन फ्री एक्सप्लोरेशन एंड discussion experimentation. Activity practice of a specific skill. Detailed job analysis and practice with aids. Action sufficient skill to ensure organizational action, field work, setting and achieving targets. Person development to improve individual competence in wide variety of tasks and situation. Example field training, simulation method, incident and case session and syndicate discussion. Organization development तो organizational improvement, work with small group from organization. अब है ट्रेनिंग मॉडलिटी. तो ट्रेनिंग मेथड डिफर करता है फ्रॉम ट्रेनिंग मॉडलिटी इन सेंस दैट मॉडलिटी इज़ ब्रॉडर. तो मॉडलिटी क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डिस्टेंट ट्रेनिंग है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग है, कॉन्टैक्ट और प्रोसेस मॉडलिटी है. अब भाई कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग एंड लर्नर आर फेस टू फेस एंड लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं और ट्रेनिंग लर्नर फेस टू फेस होते हैं. ट्रेनिंग विच मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ न्यू टेक्नोलॉजी. डिस्टेंट ट्रेनिंग सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और नया टेक्नोलॉजी होता है. फिक्स्ड सिलेबस एंड प्लान्ड सुपरविजन, रेगुलर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. तो फॉर्मल ट्रेनिंग है, यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है, सुपरविजन होता है और इवैल्यूएशन भी होता है. So rural experience are converted into learning opportunity, non-formal training. The Central Institute initiate, guide and support all aspect of training and other units subsidy to it, carry out it plans centralized training. The autonomous training unit each responsible for its own training plan and program and for linking with other units as needed. Dispersed training, knowledge about particular task, content training. Example of content training, composition of national income, how people and things function. Process training, example जो होता है process training का, how national income functions. Training cycle, a series or step or stages that comprises complete training program. Training cycle, phases of training cycle क्या होता है कि पहले तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और फिर होता है ट्रेनिंग प्लान डेवलपमेंट, फिर होता है डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. आगे बढ़ते. ट्रेनिंग नीड आर एसेस्ड एट लेवल ऑफ एग्रीगेट्स, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, रीजनल एंड नेशनल लेवल. मतलब सिक्स लेवल ऑफ एग्रीगेट्स. टू क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ TNA is national production priorities and farmer felt need for training. Extension personal need assumes three forms: training need, personal need and development need. Depending primarily on the judgment about training need, methods are classified into rational method and empirical method. Logical as way of determining the training need do not necessarily involve collection of factual data by objective means. Rational method, the relevant information collected by objective means for determining training need. Then empirical method. Rational method include observation, informal talks, complaints, comparison, analysis of report, opinion poll, buzz group training technique etc. Empirical method include करता है job analysis, परफॉर्मेंस एवेलुएशन, चेकलिस्ट और क्वेश्चनरी मेथड, टेस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक और फोर्स चॉइस टेक्निक. तो होता है अकॉर्डिंग टू स्मिथ, एटलिंग एंड डायमंड 1991 मेथड. TNAR क्विक एंड डर्टी, लॉन्ग एंड डर्टी. क्विक एंड डर्टी मेथड ऑफ TNA जो होता है उसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं. शॉर्टकट मेथड ब्रीफ रूरल विजिट बाय ट्रेनिंग मैनेजर और ये RRA PRA को इंक्लूड करता है. अब है लॉन्ग एंड डर्टी मेथड ऑफ TNA इज़ नोन एज सर्वे मेथड, इंटरव्यू. सर्वे मेथड इंक्लूड करता है चेकलिस्ट फॉर डिज़ाइनिंग नीड असेसमेंट, सफल बीम 1977 एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस टू नीड असेसमेंट.
Cox 1979. Training plan must be consistent, comprehensive and result oriented. अब आता है ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कंटेंट फॉर ट्रेनिंग, डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 6 सब सिस्टम, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, स्किल मिक्स, करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, सपोर्टिंग training material, determining the training objective ABCD, audience, behavior, condition and degree. So training objective should be smart, simple, measurable, attainable, realistic and time bound. So curriculum is derived from Latin word means to keep running. Curriculum in training program is hard. So training method क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आर्टरी एंड वेन्स है. Appropriate curriculum can be developed by concentric circle approach to curriculum. In concentric circle approach to curriculum, inner circle जो होता है प्रायोरिटी फर्स्ट, जो हमें पता होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी नोन, मिडिल सर्किट प्रायोरिटी 2, व्हाट शुड बी नोन, आउटर सर्कल प्रायोरिटी 3, व्हाट कुड बी नोन. सो ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट 2 एस्पेक्ट, ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग. सो phases which assess whether the objective for which training was undertaken has been attained or not, to implement improvement in the ongoing training endeavor and to devise future training strategy, training monitoring evaluation. Foundation upon which training monitoring, training evaluation and training review rest. Training reporting, monitoring and evaluation, systematic regular collection and occasional analysis of information to identify and possibly measure changes over period of time. Monitoring, measuring performance against predetermined goal is evaluation. Evaluation word originate हुआ था Latin word valere, means to be strong and valiant. The process of systematic appraisal by which we determine the value, worth and meaning of an activity or an enterprise. Evaluation, evaluation is objective oriented. Evaluation which is conducted in first phase or phase of program and address questions about implementation and ongoing planning is formative evaluation. Evaluation which is conducted at the end of training program to assess the program outcomes and impact is summative evaluation. Type of evaluation, self evaluation, internal evaluation or external evaluation. Evaluation carried out by every worker as matter of routine is self evaluation. Evaluation carried out by एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इंटरनल इवेल्युएशन. इवेल्युएशन कंडक्टेड बाय पर्सन और कमिटी आउटसाइड द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटर्नल इवेल्युएशन. जो तो वाइल program is running simultaneously, evaluation is done. Concurrent evaluation, evaluation is done after program is finished totally is post evaluation, ex post evaluation. ठीक है. अब आता है डोमेन्स ऑफ कंसर्न इन ट्रेनिंग मॉनिटरिंग. तो यहाँ पे क्या है, डोमेन्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड करता है वेदर कैंडिडेट स्लॉटेड फॉर ट्रेनिंग अटेंडेड प्रोग्राम और नॉट, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजल्ट क्या है ट्रेनिंग का. सो डोमेन ऑफ ट्रेनर इंक्लूड क्या करता है कि अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग हैव मेड इट सो, हाउ वर्किंग, cost of training to institution और result of the training. So the domain of trainee include करता है trainee in concern only with the training evaluation. Training monitoring include करता है top management and trainer. Training evaluation include करता है top management, trainer and trainee. So model of training evaluation, the objective of training program provide benchmark for evaluation. Objective oriented training program, evaluation which develop as an alternative to objective approach is decision oriented training evaluation. Decision oriented training evaluation is also called as CIPP approach, context, input, process, product. So context evaluation helps to develop objective or input evaluation help to shape proposals.
Process evaluation help to guide implementation, and process evaluation help to serve recycling decision. So evaluation which aim to guide decision making and based on delineating, obtaining and providing information is decision oriented training evaluation. अब क्या है? ट्रांजैक्शनल ट्रेनिंग इवेलुएशन. सो इवेलुएशन जो बेस्ड है फुल description and judgment of program on the ground, it has narrow focus on few variable. अब है transaction training process make use of change process, antecedents, transaction outcomes, descriptions and judgment. Evaluation based on distinction between its goal, मतलब value of training, and role, improving training on the ground that mixing of two dilutes. Evaluation is goal free training evaluation. Evaluation which emphasize over providing information for decision making and methodology of current approach had not pace with development. Adversary training, so approach which focus over instructional system, formalized plan and standards and learning milieu. So social, psychological and material environment is illuminative training evaluation. 4 level of Kirkpatrick's evaluation model are reaction, learning, behavior और result. आप खुद समझ सकते हो evaluation कैसे हो रहा है. Reaction, how delegates felt about training. Learning, measurements of increase in knowledge before and after. Behavior, extent of applied learning back on the job implementation. Results, effect on the learning, effect on the business and environment by training. So experiential learning cycle, so step by step process how adult learn new skill and gain knowledge, इसी को कहते हैं ELC. so इसको किसने दिया था ELC को? जेम्स ए मैककैफरी. फेजेस क्या है ELC के? 4 फेजेस है. पहले एक्सपीरियंस, प्रोसेस, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन. सो एक्सपीरियंस में एक्टिवली डूइंग इंडिविजुअली और इन ग्रुप. प्रोसेस, शेयरिंग, कंपेयरिंग, प्रोसेसिंग, रिफ्लेक्टिंग व्हाट हैपेंड. जनरलाइजिंग, ड्राइंग कंक्लूजन, आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल. एप्लीकेशन, प्लानिंग मोस्ट इफेक्टिव पोस्ट ट्रेनिंग मेथड. 7-step model of presentation, climate setting, learning objective, experience, processing, generalization, application or closure. The 7-step model of presentation differ from ELC in climate setting, learning objective and closure. Spiraling process of EL include करता है divergence, concrete experience to reflective observation, or assimilation, reflective observation to abstract conceptualization. Convergence, abstract conceptualization to active experimentation. Accommodation, active experimentation to concrete experience. So according to Kurt Lewin, change in behavior through group method follow 3-stage process of unfreezing, moving and refreezing. Unfreezing stage emphasize करता motivation. Moving establish करता न्यू नॉर्म एंड न्यू रोल एक्सेप्टिंग द गिवन फीडबैक. रिफ्रीजिंग स्टेज डेवलप करता है डिफ्रेंशिएटेड रोल, स्टेबलाइजिंग नॉर्म एंड एक्सेप्टिंग अदर्स. अब आता है माइक्रो लैब. सो पैकेज ऑफ एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय एट द बिगनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम टू साइकोलॉजिकली स्टिमुलेट द ट्रेनिंग. सो माइक्रो लैब फर्स्ट कंडक्टेड बाय National Training Laboratory in Bethel, Maine, USA, 1960s. Micro labs serve as a very useful exercise, especially with adult learner, and it helps them unfreeze, build, and break their expectations. Micro lab help करता है in improve level of interaction if conducted in informal setting. Appropriate time duration फॉर कंडक्टिंग माइक्रो लैब इज़ 30 मिनट to 2 hours. और पर्पस क्या होता है माइक्रो लैब एक्सरसाइज का इन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रैपिड बिल्डिंग. सो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है कि इंडेक्स डिस्क्राइबिंग रेट होता है ऑफ पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड रिफ्लेक्ट कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सो ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएटर रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100. When training who attended a program is more than those slotted the TPI.
मोर देन 100. सो कितने लोग अटेंड करेंगे तो मोर देन 100. तो इंडेक्स बेस्ड ऑन यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड concern to trainer and training institution is training utility index. और इंडेक्स जो बेस्ड होता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड इनकॉर्पोरेट करता है व्यू पॉइंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रेनिंग टू ट्रेनीज. तो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस इंडेक्स कहते हैं. फॉर training organization, indicator used is composite training organization index. composite training organization index. type of training based होता है structure पे. the trainee are properly structured and covered within the stipulated time period. structured training or training in which curriculum may be changed to suit the need of training is semi structured training. Training in which trainee themselves structure and training programs scheduled with the trainer, and objective of program must be clear both to trainer as well as trainees. So unstructured training based on stages of career, the process by which individual is made to enter in certain professional job as in agriculture, medicine or engineer, or have definite करिकुलम एंड कोर्स सक्सेसफुल एंड रिसीव अ फॉर्मल डिग्री एंड डिप्लोमा. तो प्री सर्विस ट्रेनिंग होता है. और द प्रोसेस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ इनकम्बेंट होल्डिंग अ पोजीशन विथ असिस्टेड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्विस ट्रेनिंग. ट्रेनिंग विच इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, लर्नर ओरिएंटेड, टाइम बाउंड सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन सर्विस ट्रेनिंग. ट्रेनिंग गिव इमीडिएटली to introduce new entrant to job is orientation training. Or training giving new extension personnel after they have been employed and before they are assigned to work in particular area. Induction training. NARAM training for freshly recruited ARS training falls under inductive training. Training provided at early stage of service life. Foundation training. Training offered to update and maintain specialized subject matter knowledge of incumbents. मेंटेनेंस और रिफ्रेशर ट्रेनिंग. समर इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग जो ऑफर होता है समर इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता है उसमें. और रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो इनिशियली मेक हुआ था बना था तो उसी का यूज़ किया था. और रीट्रेनिंग तो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट डिज़ाइन टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर न्यू असाइनमेंट्स और न्यू ड्यूटीज़. अब आता है कि ट्रेनिंग which enable extension personnel to acquire expertise in area in which such expertise is not available indigenously or is not available indigenously to required degree. तो overseas training. on the job training तो periodical ad hoc training on the job is generally provided by the superior officer or specialist to subordinate field staff. Peripatriotic ट्रेनिंग द एक्सटेंशन वर्कर ट्रेन करता है फार्मर एट फार्म सिचुएशन. ट्रेनिंग मेथड अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व ट्रेनिंग मेथड क्लासीफाई होता है टेलिंग, शोइंग, डूइंग. और ये मेथड कौन था? रे डीजी ने दिया था. सो टेलिंग मेथड में क्या है? लेक्चर दो, सेमिनार, सिम्पोसियम, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, बॉस सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग. शोइंग मेथड में राइटिंग वर्ड, पिक्चर, मूवी, फिल्म, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, chart, diagram, physical objects, demonstration, skits from observer, role play from observer. और doing method में role playing, skits, business game, syndicate, programmed instruction, project, committee report, field work, assignments. अब यहाँ पे telling method में debate, case study and laboratory sensitivity. Telling method a formal verbal presentation of organized information by single speaker on a pre-assigned subject is lecture. Chief limitation of lecture जो होता है passive role of audience. Normal pace of delivery in lecture is 160 word per minute. Trainee ratio minimum in lecture. Small group discussion a subject is useful after lecture, reading, assignment or field trip is group discussion. Most important form of group discussion is more formal in nature is seminar. The discussion paper prepared by participants on basis of their study and research and are presented in discussion is based primarily on this paper is seminar.
A group of 3 or 4 experts in a specific area of specialization may be invited to address a group of training and particular subject is panel discussion. Modified version of panel discussion in which 3 or 4 resource person discuss करते हैं specific topic को colloquium और मीटिंग इन विच पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करता है शॉर्ट प्रिपेयर्ड पेपर ऑन गिवन टॉपिक ईच वन स्पीक फॉर डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड प्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज एंड सब डिवीजन ऑफ जनरल टॉपिक इज सिम्पोसियम cooperative gathering of individual who discuss learn and apply particular skill under expert supervision is workshop. Problem situation is presented to participants in program for careful study and examination for all facets so as to enable them to exercise their analytical synthetical and decision making power. Case study. The discussion period that may follow after lecture is forum. A small group of knowledgeable people is given a problem and asked to produce as many solutions as possible within a given period is brainstorming. ट्रेनर ट्रेनिंग रेशियो मैक्सिमम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में और इट इज़ मेथड जो कि ओरिजिनेट हो रहा है यूएसए में. ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्राइज करता है 2 सेशन रेड एंड ग्रीन सेशन. सो पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर आइडिया विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर रिएक्शन. तो ग्रीन सेशन है और आइडिया रिकॉर्डेड होता है और फिर स्क्रीन होता है तो रेड सेशन है. टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग लार्ज ग्रुप इनटू मच स्मॉलर वन इन विच टॉपिक इज डिस्कस्ड विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. बस सेशन को हडल सिस्टम और फिलिप 66 भी कहते हैं. अ कॉमन पैटर्न इन is to have 2 teams, one representing the affirmative and other negative side of question debate. The training method that gets its name from particular behavior of honeybee bus system. A small group of individuals appointed or elected to perform a task that cannot be done effectively by entire group is committee. Assembly of representatives from local unit of parent organization. We have common interest convention. Assembly of different organization and department for discussing issue of common interest. In result is set of recommendation for policy making. Conference. A meeting of group of people with common interest established for purpose of diagnosing, analysis and seeking solution to a specific problem is clinic. So showing method. Printed or typed sheet of paper used for quick combination before lecture is handout. Providing participants to test a specific idea they wish to learn in daily life situation and to offer them opportunity for accessing organization need training in field. Providing insight to one own behavior, sensitivity to other, improving its behavior skill. तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नॉर्मल नीड करता है टाइम पीरियड 5 to 10 days. और इसको और क्या कहते हैं लेबोरेटरी ट्रेनिंग, टी ग्रुप, डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग ग्रुप, इनकाउंटर ग्रुप. डूइंग मेथड. तो गेम्स इन विच consequence of success and failure are not for real, however experience of success or failure is real. तो स्टिमुलेशन मेथड. और स्टिमुलेशन मेथड को कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस मेथड भी कहा जाता है. स्टिमुलेशन मेथड इंक्लूड करता है रोल प्लेइंग, बिहेवियर सिमुलेशन, गेम्स एंड इन बास्केट एक्सरसाइज. ए पर्टिकुलर ट्रेनिंग विच गिव्स एन इंसाइट इनटू complex behavioral pattern of individual is role playing. Data in role play method is self generated. The aspirated activity or exercise in which training compete करता है with each according to definite set of rule games. Primarily a study group of 6 to 8 participants with chairman and secretary to work on its assigned problem and end result is result containing recommendation of action. Syndicate method. Please like and subscribe.